Gee guys, this is task 2. So let's see how we're going to do this. So first I have two arrays declared. One is current highest and second one is winners. Current highest is going to display going to store the highest bid that is made for a particular item, and winners is going to store the buyer ID of the person who has made that highest bid. ठीक है. उसके बाद I'm displaying a heading print list of items in auction, and I'm going to display all the items in auction with the description. It's not required, but I'm displaying it just to give an idea to the buyer how many items we have in an auction. और दूसरा इसलिए दूसरा ये लूप में जो मैं कर रहा हूँ इज़ आई एम स्टोरिंग ज़ीरो इन द करंट हाईएस्ट ऑल द लोकेशन इन द करंट हाईएस्ट अरे. So when I'm displaying the value of current highest, it should at least display 0 if there is nothing in it, right? उसके बाद I'm getting input from the user. I'm asking the user or the buyer for which item that person wants to bid on, और उसका जो input है वो response में आ रहा है. Then I have this variable called LOC, which would be used to store the location of the item in the array. I'm going to search for that particular item in the array where that particular item number is. So I've used this while loop while the first value, because LOC is 1, so while the first value in this item num array is not equal to response, if it's not equal, then increase the value of LOC by 1 so that we can check or compare for the second value in the array. So, and also if the value of LOC exceeds NOI, and remember NOI is stores the maximum number of items in auction. So अगर मेरा LOC जो है NOI से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि मुझे वो आइटम array के अंदर मिला ही नहीं. So I need to display some sort of error message that invalid item number entered, री-एंटर. और जब मैं री-एंटर करवाऊँगा रिस्पॉन्स में सेम फिर से मैं यूज़र से डेटा लूँगा और LOC को मैं फिर से 1 कर दूँगा ताकि मैं शुरू से फिर से चेक करना शुरू करूँ, ढूंढना शुरू करूँ, या प्रोग्राम ढूंढेगा कि वो आइटम नंबर कहाँ पड़ा हुआ है. एंड दिस लूप इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ अनटिल इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक आइटम जो कि मैच कर रहा है रिस्पॉन्स के साथ. तो जब वो मैच करेगा मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा. जब मैं लूप से बाहर आऊँगा तो LOC वुड बी द लोकेशन एट विच दैट आइटम नंबर इज़. तो इस LOC को इस्तेमाल करके आई वुड डिस्प्ले द आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड द करंट हाईएस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन टास्क 2. Then I'm going to get the buyer number from the user and the bid for that particular item, right? उसके बाद क्या है, I'm going to start another loop which is going to check whether the bid is less than or equal to the current highest. So it has to be greater than the previous highest bid as required in the task. तो जब तक वो bid enter वो नहीं करता जो कि current highest से बड़ी है, ये loop करता रहेगा. तो जैसे ही लूप से बाहर आएगा इसका मतलब है कि उसकी बिड करंट हाईएस्ट से बड़ी हो गई है. अगर बड़ी हो गई है देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ करंटली द विनर, क्योंकि इससे करंट हाईएस्ट है. तो उसका जो बायर आईडी है मैं विनर के अंदर स्टोर कर दूंगा उसी लोकेशन में जिस लोकेशन पर मेरा आइटम है. और उसके बाद मैं उससे पूछूंगा डू यू वांट टू बिड अगेन. रिस्पॉन्स में फिर से मैं लूँगा. अच्छा, ये रिस्पॉन्स का यूज़ जो कि ख़त्म हो गया था तो आई कैन यूज़ द सेम वेरिएबल अगेन. एंड इफ़ द पर्सन एंटर्स येस देन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. और हमें पता है कि रिपीट अनटिल जो है फॉल्स कंडीशन पे रिपीट करता है. अगर वो n एंटर करता है, स्मॉल n या कैपिटल n, दोनों केस के अंदर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मेरा लूप चलना जो है वो बंद हो जाएगा, राइट.